May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Please take your seat. Thank you, sir. You are Mr. Abhishek. Yes, sir. अभिषेक, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, हिंदी में बात करना चाहते हैं? सर एक्चुअल आरपीएससी में बाइलिंगुअल होता है तो बाइलिंगुअल ठीक रहेगा सर. Okay. So as you can see that we are wearing mask. Yes, sir. And you are also wearing mask to contain the spread of coronavirus. And we are maintaining a sufficient distance among us. Yes, sir. But during our conversation, it is not convenient to wear mask along with the glasses. So I will remove my mask only when I will be talking to you, and you are also permitted to remove it if you like to. Thank you, sir. So without taking your name and without telling us about your home district, introduce yourself to the board members. I did my 10th and 12th class from Jaipur. I scored 88.33% marks in 10th and 83.51% marks in 12th. In 12th, I did it from physics, chemistry and maths. Then I took admission into SKIT and I did my engineering in computer engineering with 71.62% marks. Okay. Then I was placed into TCS and currently I am doing a job as divisional accountant under CAG, Comptroller and Auditor General of India. Okay. Now Yes. you want to switch your job and come to RAS. Yes, sir. Okay. You are not satisfied with your current job? I'm satisfied, but I want to improve my profile. I want to grow. Actually, when I was in TCS, I wanted to. Then only I decided to go into RAS. Meanwhile, I got a job into as a divisional accountant, and I joined it. And Can now, I consider it as an improvement that a computer graduate is working as a accountant? Should I consider it as your improvement or what? I will consider it as a change of my stream. I was graduated No, I'm from. not asking about change or not change. Yes, sir. Is it improvement? Is it promotion, or should it be considered as demotion? For Learning- a computer graduate to work as an accountant. My question is as simple as that. As a learning new things, I learned accounts first time in my life, and that's improvement on my part. And my profile in my job is not just accounting. I am also there as a watch eye on the department, as a representative of AG office. Now again, leaving a central government job and coming back to the state government job, is it your improvement? Yes, I'll consider it Why? an improvement. First of all, in state services, you get to work as higher official, and you get as an RAS you get to work in different departments. You get variety of works. You get social prestige. You get high salary. So it's of course improvement in all aspects. But you said that you have multitasking and you have a multitasking job in your current profile. Yes, I think you have lots of dimension to work in. है ना? I do, but here I believe that there is a broader aspects to it that I want to the RAS and associated services. Are you? What qualities of yourself are you claiming that you are going to be a good administrator in RAS? What are the qualities? So I am a hard worker. I am honest, and I want to improve myself, and I'm compassionate. I think these qualities, I believe that Okay. will make me a good administrator. Okay, Abhishek. Yes. Tell me, what is the basic difference in between digital computer, analog computer, and quantum computer? So I know about digital computer and quantum computer. I don't know about analog computer. Okay. So digital computer is the computer now we use. It works on 0 and 1. And quantum computer not just takes 0 and 1, it takes all the values in between, and therefore it has bigger storage and high data transfer speeds. Tell me about the languages of the computer. Yes. C, C++, Java, all these type. Okay.
Yes. Then a general story about the development of the computer from the past to the recent era. It was a long story, and computer was developed in many generations: first generation, second generation. In first generation, it was just as a computational device like calculator of nowadays. Then I don't know the exact generation, how it Then it was tell me, mainframe. what is Yes. analytical engine? Analytical Engine. engine. Sorry. Okay. What is the basic difference in between LAN, MAN, WAN, and VPA? LAN is local area network. And MAN is range metro. of LAN? LAN, the range is small office or big office. MAN is metropolitan area network, a town, a city, and WAN is wide area network. FM broadcasting is based on LAN, MAN, or WAN. FM broadcasting is frequency modulation, and I think comes under radio transmission. Abhishek, tell me about what is transducer. Sorry, sir. Okay. What is hybrid computer? Sorry, sir. Okay. The super version, the latest version of the supercomputer of Japan and India. Do you explain the name of this computer? Yes, sir. Recently it was introduced over Param. I am not able to recollect the name. Okay, tell me the feature of the memories from lower to the higher version. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, Last one. picobyte. And Bruntobyte. I have not heard about it. Okay. Supercomputer are based on which kind of the memory? Picobyte. Not sure. Abhishek, Yes. I can see that you complete your 12th in 2006 Yes, sir. and 10th in 2004, Yes, sir. and you born in 1991. Yes, sir. You complete your 10th in the age of 13 and 12th in the age of 15. Yes, sir. How? Actually, I took admission in first class. I skipped pre-primary classes. And what was the drawback of these? Have you faced something? In first class and second class, I faced Normally the age of learning process. passing 12th is 17, 18. Normally Yes, the sir. 18. Yes, sir. But you have done in age of 15. I did 12th in 2006. 6. Yes. At the age of 15. Yes, sir. How challenging is it? In later classes, it was not challenging. Okay. In primary classes, first and second classes, it was challenging. Especially, I was There's a need of educated these primary classes Yes. in our curriculum. Yes, sir. What is the need of these primary classes? I believe that these primary classes introduce you to the school system and does not put too much pressure on children. Don't you face any difficulties or challenges in the schooling? And that you can observe in your career as well. I faced challenges in 9th and 10th. Actually, till 8th class, it was completely different. In 9th class, science and mathematics was a bit difficult, and I faced a lot of challenge in that. Right now you are studying in, you study accounts and Yes. these all things. What is twin deficit situation? Twin deficit, balance deficit is when the balance sheets of corporates and the balance sheets of banks both are facing challenges. And what are the issues right now the banks faces in the error of their balance sheets? NPAs. And what are the methods we are adopting to solve these issues in the current scenario? To tackle NPAs, we Have you heard the name of bad banks? Sorry, sir. Bad banks. Yes, sir. A bad bank was announced in the budget. And the bad bank will have resolving the issue of NPA permanently. Bad bank will help in resolving the NPA problem, because it will take over complete NPAs of all the banks and will only focus on NPAs, and it will release the pressure from the What are the public sector banks. what is the reason behind India is getting more FDI from Malaysia or Maldives or Singapore? Not from the Western countries, not from the Eastern countries, not from the Gulf country. Why from Maldives? One issue may be round tripping.
that people from here are investing through indirect routes in India and making black money. What is the issue of GAR? GAAR? General anti-avoidance rules. It will impose the direct taxes on the companies that are not paying sufficient taxes. ठीक है अभिषेक सर. Yes. Who wrote our constitution? Who wrote? Drafting committee. And the chair by drafting committee was chaired by Dr. 𝐵𝐻𝐸 𝐸𝐴MBEDKER. and how many committees were there in the Constitution Assembly? Exact number I don't know. Sir. You don't know. Yes. What is thermal inversion? Have you heard this word? Yes. What is? It's when the change in temperature is not as it should be. Like And how it should be? when we reach upwards, the temperature should drop, but instead of dropping, when it is higher, then it's known as temperature And inversion. what are the conditions in which thermal inversion happens? In hilly regions, during the night time, when the heavy air drops down the hill, so when we go from earth to upward direction, then it actually कैटावेटिक विंड्स क्या होती हैं? कैटावेटिक आपने नाम सुना है? yes sir. क्या होती हैं? सर जब विंड ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तो एक्सपैंड करती है, तो वो कैटावेटिक कहलाती हैं. सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा. अच्छा, कैटावेटिक के साथ एक और शब्द आता है एनाबेटिक, तो आप बता पाएंगे? सर अभी ध्यान नहीं आ अभिषेक, आपकी कौन कौन सी 3 ऐसी आदतें हैं जो आपको बहुत परेशान रखती हैं? रहा. सर एक तो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, कोई भी काम में कई बार बहुत डिले करता हूँ इसी कारण से कि वो परफेक्ट होना चाहिए. परफेक्शनिस्ट होना तो अपने आप में अच्छा माना जाता है, आप इससे परेशान रहते हैं? सर ये अननेसेसरी डिले क्रिएट करता है कई अच्छा बार. ठीक है. और समटाइम्स टू पोलाइट. टू पोलाइट, बीइंग टू पोलाइट इज हार्मफुल फॉर यू? समटाइम्स. ओके, व्हाट एल्स? भी आते हैं. Out of anger, greed and fear, if you are supposed to remove only one qualities out of you, what it would be? Fear. Why? Because all anger and Greed. comes from fear. I believe it. Anger is when you feel that you are somehow threatened. Okay. Then you feel anger. Okay. So it will automatically be deleted if fear is not there. Greed is also somewhat attached with fear because we want to collect more and more because we fear that. Okay, right, Abhishek. It was nice talking to you. I you, believe sir. now your interview is over. Thank you, sir. Sit, Abhishek. Thank you, sir. So, how according to you your interview gone? So I think average. You can remove it. And which area do you find that you need to work? So I think I was little anxious when I was talking. Okay. And what was the possible reason behind that? So giving more and more mock interviews, more exposure. मतलब ऐसा है कि ज़्यादा मॉक इंटरव्यू ने आपके अपने को, स्व को, सेल्फ को कहीं लूज कर दिया है. आप खुद नहीं रहे जो थे आप मॉक इंटरव्यू की वजह से. नहीं सर, ये मेरा दूसरा मॉक इंटरव्यू है. ज़्यादा मैंने मॉक इंटरव्यू लिए नहीं. तो आपने अभी बोला कि क्या बोला आपने कि मॉक इंटरव्यू की वजह से मुझे नहीं, लग मैं कह रहा हूँ कि एंग्जाइटी दूर करने के लिए और मॉक इंटरव्यू लूँ ताकि एक्सपोजर ज़्यादा हो. नहीं, देखिए ऐसा है कि एंग्जाइटी होने की 2 वजह हो सकती है. या तो हमें कुछ आता ना हो, या फिर जो आता हो उसे हम बता ना पाते हो. 2 ही वजह है. और तो जैसे आपने बोला कि ग्रीड के, फियर के ये कारण हैं, तो वैसे ही मुझे ये लगता है नॉलेज वाइज तो इम्प्रूवमेंट हमेशा जीवन भर चलता ही रहता है, उसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. जी सर. कब इंटरव्यू? 28 को. 28 को है ना, तो अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से 15-16 दिन का. देखिए 2-3 जगह हो जहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है. एक तो है कि इंग्लिश के बजाय जब आप हिंदी में बात करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए आपसे हम लोगों ने हिंदी में भी बात करके देखा और हिंदी में भी कोशिश की टटोलने की. तो हिंदी आपकी ख़राब नहीं है, हिंदी तो अच्छी है आपकी. अब टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं आप, टेक्निकलिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो टेक्निकल वर्ड्स आजकल हिंदी में खूब प्रचलन में है. यूज़ करिए आप, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे. बस कोशिश ये करनी है कि डेवलपमेंट की जगह पर अगर विकास शब्द यूज कर पाएँ तो अच्छा है. अगर विकास शब्द उस समय नहीं मिल पा रहा है तो डेवलपमेंट भी चलेगा, कोई इशू नहीं है.
और उसमें मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस जो होती है वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। जब नहीं रहेगी तो आपकी सहजता सामने आएगी, और जब सहजता सामने आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से फिर हेजिटेशन वाला पार्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, जो आप एंग्शियस होने की बात कर रहे हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से आप विचार करके देखिएगा कैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। जी सर, अभी तक की रहा है हिंदी में ही होता है। हाँ, तो हिंदी में ही वो लोग बात करेंगे, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करिए हिंदी में बोलने की। बोल दीजिए कि सर हिंदी में बात करते समय कुछ शब्दों की टेक्निकल हिंदी मुझे नहीं पता है, बाकी आई एम मच कंफर्टेबल इन हिंदी। ठीक है ना, ये आपके लिए सेफ गेम हो कि कहीं आप कोई शब्द भूल भी जाते हैं तो आपके लिए क्षम्य हो जाएगा, मतलब माफी योग्य हो। दूसरी चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर सोचने वाली बात है, जहाँ पर विचार करने वाली बात है, जहाँ पर विश्लेषण वाली बात है, वहाँ पर आपका पक्ष ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आपने तुरंत बताया फियर, और फियर को फिर एक्सप्लेन किया। यस। तो ये स्पॉन्टेनिटी जो होती है ये तभी आती है जब कुछ भीतर भरा हो। बात समझ रहे हैं, अचानक से नहीं आ गई। तो नॉलेज के एंड पर नॉलेज ठीक है आपके पास। हाँ, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा कंटेंट के लेवल पर, सब्जेक्ट के लेवल पर सब्जेक्टिव नॉलेज की थोड़ी बहुत कहीं कमी हो सकती है। उसकी कमी के भी दो रीजन है। एक तो पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, क्योंकि मेंस 2018 में आपका हुआ होगा। कब हुआ था मेंस? 18 में सर। 18 में हुआ था, 2-3 साल हो गए। उसके बाद जनरली कोई किताब उठा के पढ़ता है नहीं जब तक परीक्षा आ ना जाए। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पढ़ा ही नहीं हो चीज़ों को। लेकिन आपके साथ पहली वाली कंडीशन मुझे ज़्यादा लग रही है कि पढ़ा है, सुना है, लेकिन याद नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल भी। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिए कंटेंट के लेवल पर। इकोनॉमिक फ्रंट पे साइंस वाले में तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गच्चा हो गया आपके साथ, कंप्यूटर वाले पे पार्टिकुलरली, है ना। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन पढ़े हुए भी 10 साल हो गया आपको। यस सर। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप जॉब कर रहे हैं। तो करंट प्रोफाइल अपना ठीक कर लीजिए, जो अभी देश में चल रहा है आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे, बजट के फ्रंट पे। कैग कैसे काम करता है, कैग ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से पिछली सरकारों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो कैग की भूमिका बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो उस पर अगर सवाल कोई पूछना चाहे तो बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है उसके साथ। और आपके जो सिलेबस के कुछ मूल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस, इकोनॉमी, ये सारे जो पोर्शन है, यहाँ पर डिफाइनिंग कुछ वर्ड्स होंगे। तो क्योंकि समय है आपके पास 15-16 दिन का, तो आप आराम से इनको पढ़िए। जी। और शीशे के सामने तो अब ज़माना रहा नहीं, तो मोबाइल के सामने आप अपने इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड कीजिए। जी। अपनी बातों को रिकॉर्ड कीजिए, हेडफोन लगा के खुद सुनिए, फिर डिलीट कर दीजिए, फिर रिकॉर्ड कीजिए, फिर डिलीट कीजिए। ऐसा 7-8 बार करते ही जो हेजिटेशन वाला पार्ट है ना, वो हेजिटेशन वाला पार्ट आपका चला जाएगा। जी सर। और ज़्यादा से ज़्यादा जो घर में मेंबर होंगे आपके, उनके साथ फॉर्मल बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मतलब एक तो होती है घर में बैठ के तो कुछ भी हो रहा है, उस तरह की नहीं, औपचारिक बातचीत जहाँ पे शब्द आपके औपचारिक होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, कैजुअल नहीं हो। उस तरह की बातचीत करने की आदत डाली। हालांकि सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन नौकरी चाहिए तो थोड़ा बहुत घर में तो किया ही जा सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सलाह किसी की लेने की आवश्यकता है नहीं। आवाज़ थोड़ी सी मुझे लग रही कि आपकी थोड़ी और बढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। जी सर। आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के बात कीजिए, वो कॉन्फिडेंस उससे भी झलकता है। आप जो बैठ रहे हैं, अगर खड़ा होकर फिर से कुर्सी का पूरा सहारा लेकर बैठें तो हाँ, तो जब पीठ को सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिलैक्स होता है। हाँ, तो ऐसे ही बैठना है आपको। मतलब वहाँ पर आप बैठने के बाद खिसकिएगा मत, ऐसे ही इस अंदाज से बैठिए। कुर्सी पर बैठने की आदत डाल लीजिए कि मतलब आप खड़े खड़े अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ जाके पीठ को सपोर्ट मेरे मिल पाए। ठीक है, तो इससे आप पूरे इंटरव्यू में कंफर्टेबल रहेंगे, और कंफर्टेबल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा सहज होकर बात कर पाएंगे। तो फिर और भी बातें आपकी ठीक हो जाएंगी। जी सर। कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध मॉक अगर समय मिले तो आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज हमें लगता नहीं है। सर आपने कहा कि आपकी ओरिजिनलिटी मॉक में खो गई, ऐसा लगा तो सर ये नहीं, मुझे लगा कि बहुत सारे, मुझसे सुनने में गलती हो गई। मुझे लगा कि आपने बोला कि बहुत सारे मॉक दिए सर, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया हूँ। जी, एंग्जाइटी है, तो ऐसा लगा। बहुत ज़्यादा मॉक देने से क्या होगा ना कि जिससे भी पूछिएगा सलाह तो यहाँ पे फ्री में मिलता है, और वो सारे सलाह अगर हम आजमाते चले जाएं तो अपना व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो आपका भी व्यक्तित्व तो बचा ही हुआ है। जी, ठीक है ना, इसको बचा के इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना रिकॉर्डिंग कीजिए, अपना देखिए, घर वालों से बात कीजिए, फॉर्मल तरीके अपनाइए, बाकी सब ठीक हो जाए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।